जो मैंने बचपन से सपना देखा है वो कैसे नहीं सच हो सकता, तो वैसे भी लगता था। मैं गेटिंग इमोशनल। मैं कुछ भी कर दूं, मेरे को नहीं लगता जो उन्होंने मेरे लिए करा है मैं उनको कभी रीपे करना चाहूंगी या कर पाऊंगी। जा गली के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इतना बुरा नहीं था। मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, किसका सपना नहीं होता। जी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा करेंगे भगवान। But your neighbors is ऋतिक रोशन. I hope हो, तो मैं तो घर पे जाऊंगी ही नहीं। सर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे तो कुमड़ा लॉगी तुरई की रिपोर्ट लिखवाने आ जाएंगे लोग। कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैं सब सीख लेती हूँ। मैं अकेले फिल्म बना लूंगी। बहुत खराब लोग हैं एकदम, मतलब क्या बताएं, बड़े मतलब इंडस्ट्री तो लड़की जाएगी तो मतलब मेरे को नहीं लगता टिक पाएगी। उंगली तोड़ू मैं जाके तेरी। You're really hotter than the bottom of my laptop. Damn girl. Subscribe to Uncut दोस्तों। Hello and welcome to a brand new episode of Uncut Studio. My name is Sanya and I am with Sanya. Hello. Hi Sanya। कैसे चल रहा है यार? मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, Do तुम you बताओ। also agree कि सारी सानिया जो है वो मस्त होती है? Yeah, they're not just must, they're cute. What else, Sanya? Please tell me. They're hot. Okay, guys, और where are your adjectives? Come on. Supremely talented. I agree 100%. But can you sing and you can also dance, right? I can't sing. Don't lie. मेरी नाक मत कटवाओ यार। I can't sing. But you know what? Whenever I'm around people, then this funny singing comes out of me, which is like, क्या है ये? Which is But whenever like I'm what? alone, I'm a better singer. Like I'm a bathroom singer. I sing so well whenever I'm in the washroom. I don't know why. What song is that? Any song. Can you sing something for us? Do it. Okay. कोई do you guys Beat देंगे. Which one? नहीं, which song? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। इतना बुरा नहीं था। Tell me, I haven't ever read like a single bad review of yours. I haven't seen any hate comments on your channel or your Instagram. How is it? How is that happening? I don't know. I'm too blessed. I'm shocked beyond limits कि ये कभी मेरे साथ हुआ क्यों नहीं। पर मतलब होना मैंने भी किसी के चाहिए साथ यार. नहीं होना चाहिए, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा करेंगे भगवान। But like, do you like see reviews and all when you're like? Of course I have to, but you know I do take them seriously, but there are some people that I really go to whenever my films and my work comes out. Yeah. वो सिर्फ दो तीन लोग हैं जिनकी मैं सुनती हूँ. Yeah. They are the people I know will give me the best review of my work, unbiased. But like, it was bad, it was horrible, it was good job. And how do you take criticism? ऐसे रोना आ जाता है या फिर you're like okay सही बोल रहे हैं? No, very exactly. मतलब वो 4 जनों से जो मुझे criticism मिलती है, I really listen to it, good or bad. Yeah. Okay. Tell me, you're a full Delhi वाली girl, but you also moved to Bombay now. Yeah. तो अब आप अपने आप को क्या consider करती हो? दिल्ली वाली girl or are you like a full Bombay girl, Sobo girl? Sobo? No, I'm not from Sobo. You're from Andheri. अंधेरी. सस्ता है दोस्तों. And when I had moved to Bombay, so that's relatively cheaper. So of course ऐसा option तो था नहीं. सोबो जाके रहेंगे, पापा कहेंगे चुप कर जाओ, वापस दिल्ली आओ. But your neighbors is ऋतिक रोशन. Is it? Are you not? I don't know. मैंने अभी तक वो उस घर में मूव नहीं किया है. I hope हो, तो मैं तो घर पे जाऊंगी ही नहीं. I'll sit outside my house to greet him every day. Sir नमस्ते. Sir कैसे है sir? सब सही चल रहा है. But like, do you miss living in Delhi? Oh, I miss home definitely. Bombay, I like Bombay because there's work. It's much more fast paced. Whenever I want to relax, I want to eat घर का खाना, राजमा चावल, परांठे with ghee, मक्खन, I have to come back to Delhi. वहाँ नहीं मिलता ये सब. So
Yeah, I do miss Delhi. I really miss home and mama papa. Yeah. You guys have a question? सो मैम आजकल आपके अराउंड एक न्यूज़ चल रही है कि आप जवान में दिख सकते मेरे आसपास चल रही है। कहाँ चल रही है भैया? हो मतलब न्यूज़ में हमें दिख रही है चीज़ कि आप जवान में काम करने वाले हो शाहरुख खान के साथ। करने वाले हो? नहीं, मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है। किसका सपना नहीं होता? आई एम श्योर तुम कोई अगर एक्टर बनना भी नहीं चाहता हो और उनको मौका मिले कि शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हो तो तुम चुपचाप कर लोगे कि मुझे नहीं आती पर मैं सीख लूंगा। So I really want to work with him and I hope I get to work with him soon. But you're on the Wikipedia page of Jawan, by the way. Is it? Yeah. I'm so lucky. You have Shahrukh Khan's number? No, I don't have his number. Okay, when you have it, can you give it to me? Of course. समाज सेवा सबके पास जा रहा है नंबर। Tell me, speaking of Kathal, this is a vegetarian's ka mutton, as they say it, right? Is You it? were a non-vegetarian before and now you're a Yes. vegetarian. What do Yes. you think of Kathal as a vegetable, fruit, jackfruit? It's so versatile, isn't it? It's a sabzi, it's a fruit. Now it's a film. कुछ है जो कटहल नहीं कर सकता। मतलब starring in कटहल as Yeah. कटहल। Yeah, but why is it named Kathal and how did this role come to you? Why is it named कटहल? Because it's a story about 2 stolen कटहल्स। Okay. और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मोबा के छोटे से शहर में एक एमएलए जी के 2 कटहल, अंकल होंग कटहल होते हैं। एक ब्रीड ऑफ कटहल होता है जो बहुत ही रेशेदार और बहुत ही टेस्टी होते हैं। उनके बेचारों के 2 कटहल चोरी हो गए हैं और पूरी पुलिस फोर्स ये 2 कटहल ढूंढने में लगी हुई है। तो मैं महिमा बसोर, ये मेरा कैरेक्टर है और हम लोग सब सारे केसेस छोड़कर ये 2 कटहल ढूंढने में लगे हुए हैं। ये फिल्म हुई पगलेट, मैंने एक फिल्म करी थी गुनीत मोंगा, अचिन जैन, ये दोनों ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर्स नाउ। They both produced Elephant Whisperers. Did If you you haven't, catch Oscar? I did. I held it. How was it? Best feeling ever. So after Paglet, I got a call from Guneet, and she said I have a one-liner of a film, which I think you should definitely do. And if you know Guneet, अगर उनके interviews देखे हैं, उनका confidence देख के ना 10 गुना confidence आपके अंदर आ जाता है. She oozes out that energy that anything is possible in the world. Of course, that's the reason she's the one who got the Oscar for our country. So she called me and she was like, I have a one-liner. 2 कटहल गायब हो जाते, एक पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढ रही है। मैंने कहा 2 कटहल गायब हो जाते मतलब ठीक है, सुना है सोना चांदी गायब हो गया, पर 2 कटहल। She told me it's based on true events. So this is actually a true story. सच में एक पॉलिटिशियन के 2 कटहल गायब हो गए थे जिसको पूरी पुलिस फोर्स ढूंढने में लगी हुई थी। How sad is that though? Yeah, but अब लोगों की भैंसें खो जाती हैं तो होता है। मतलब my character is also, of course, like she is very enthused that she will be able to solve this case. Yeah. But teaser में I'm saying कि सर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसे तो कुमड़ा लॉगी तुरई की रिपोर्ट लिखवाने आ जाएंगे लोग, कि I'm also doubting कि this is no case. Yeah. But of course she has to do her job and do it perfectly. तो ये one liner सुन के I was sold, and because I had a very good experience working with her on Paglet, I was like, I cannot say no to a film which she's getting to me, because I honestly think I had zero confidence to take a film like Paglet on my shoulders. I tell you why, because I was already doing films like Dangal, Badhai Ho, Photograph. So I thought that I found it, okay, and now I can like, you know, up सिंगल हैंडेडली आप फिल्म नहीं उठा सकते अपने शोल्डर पे। सो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एंड उमेश सर, माय डायरेक्टर ऑफ पगलेट, दे गेव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट, एंड पगलेट डिड वंडर्स फॉर माय करियर। Yeah. So it's which is on Netflix too. Netflix. So yeah, that's how I got Kathal. Do you think when actors do very serious roles, that's when the audience takes them seriously? Do you think Paglet changed the way your career shaped because it was a serious film? I have done Photograph too. Yeah. So I don't know, maybe it's the relatability that people felt, because I got so many calls from women after they watched Paglet that how much they could relate to it, you know. And I didn't know that there are so many stories like Sandhya out there in my family. So I have a very close relative who has gone through the same thing, and my mother told me about it, and she said she
Sanya, but I think she still has those photographs. If you guys have not seen Paglet, please watch it on Netflix. It's also dramedy. It's more like on the drama side, पर उसमें भी comedy है. So basically, I'm a widow and I'm not able to grieve क्योंकि मेरा कोई connection नहीं है मेरे husband के साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मर तो गया पर मैं क्या करूँ. ठीक है, तो अच्छी स्टोरी है. बट आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द सीरियसनेस. मे बी इट्स द रिलेटेबिलिटी एंड पीपल हु कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर is much more crucial. I meant it in a way that when you're doing a lot of comedy films, people think that's not acting, but I think that's very hard, right? Comedy करना तो बहुत मुश्किल है. Yeah, exactly. And do you think people don't take them seriously who do comedy? That's not true. Rajpal Yadav, जो हमारी फिल्म में है, he is a brilliant actor, and he is, I think, the bap of comedy. Yeah. Of course, he's an actor, so I don't think so. That's the case. Yeah. Tell me, how was it working with Rajpal Yadav and Vijay Raaz? विजय राज के साथ मैंने पहले भी काम कर रखा है. इन पटाखा वो मेरे बापू बने थे, इसमें वो हमारे एमएलए बने हैं. बहुत ही अच्छा लगा. थोड़ा लगता है ऐसे दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करते हुए लगता है कि तुमने क्या किया बेटा, यहाँ कैसे पहुंची हो, मेहनत करके जाना, नाक मट कटवा लेना. तो आई वॉज डेफिनेटली वेरी, मैं बहुत, मुझे कोई रोल मिलता है तो फिर मेरे को होमवर्क करना बहुत पसंद है, तो मेरी सारी किताबें बाहर आ जाती हैं और मैं पेन पेपर लेकर स्टार्ट हो जाती हूँ कैरेक्टराइजेशन करते हुए. बट आई न्यू दैट दीज आर द एक्टर्स जो स्क्रिप्ट के बियॉन्ड परफॉर्म करते हैं. वो स्क्रिप्ट में जो डायलॉग है वो तो बोलते ही बोलते हैं, उसके साथ वो खुद ऐड भी करते हैं. सो यू कैन नेवर बी इन योर ओन वर्ल्ड डूइंग अ सीन विद देम. यू माइट मिस आउट ऑन समथिंग एंड यू वोंट बी एबल टू लाइक मेक द सीन द परफेक्ट सीन. सो डेफिनेटली दैट वाज इन माई माइंड ऑलवेज. राजपाल यादव जी के साथ ना काम करना बड़ा मुश्किल इसलिए था कि वो इतने फनी हैं और वो इतने अच्छे एक्टर है कि मैं अक्सर खो जाती थी कि कितना अच्छा कर रहे हैं यार, और हंसी नहीं रुकती थी. एक सीन में तो बहुत मुश्किल हो गया था उनके साथ करना क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहे थे कि वो बार बार इतना अच्छा कर रहे थे कि we all couldn't stop laughing. We all were literally ROFL. क्या बोलते हैं इसको? ROFL. Rolling on the floor laughing. Yeah. All the entire set. I just sounded like a boomer. ROFL. Okay, what do you think LOL is? Lots of love. Lots of love for me. Tell me, is there something that you learned from these two actors that you can like use in your acting journey आगे? Oh, definitely. I'm always in the student mode. Whatever I'm doing, not just this film, but every film. Like I'm always aware of what is going on set. Not just with the actors, but even with the technicians. Yeah. It's like कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैं सब सीख लेती हूँ. तो मैं अकेले फिल्म बना लूँगी. तो I'm always aware of what is going on, especially with the actors. Why? Because on this one, we have Rajpal Yadav, we have Vijay Raaz, there's Anand Joshi, Neha Sarf, Gobind Pandey, Shashi Ranjan. They're all NSD pass outs. They're all my seniors. So, as I said, not just with Rajpal Yadav or Vijay Raaz sir, they all used to perform beyond the script. तो ऐसा था कि प्ले चल रहा है तो खत्म, आपके डायलॉग्स खत्म हो गए, अगर कट नहीं बोला तो सीन चले जा रहा है, तो किसी ने कुछ और बोल दिया, अगर आप नहीं सुन रहे तो यू विल मिस आउट, तो आप रिएक्शन कैसे दोगे, तो किसी और का ही सीन स्टार्ट हो गया. तो इट नेवर फेल्ट लाइक इट्स नॉट हैपनिंग इन रियल लाइफ. सो इट ऑलवेज फेल्ट लाइक ये सीन तो है बट it was a very real scenario. So that is what I learned from all these actors that I worked with. Also the dialect was a very difficult thing for me to pick. Otherwise भगवान जी थैंक यू, बट आई एम वेरी गुड एट पिकिंग डायलेक्ट्स की. हरियाणवी कर लिया दंगल में, पटाखा में हमने एक रॉसी का विशाल जी ने खुद का ही बनाया था वो डायलेक्ट, वो पिक करा. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था करना. बट नेहा जो खुद NSD पास आउट हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो खुद MP से हैं, तो उनका डायलेक्ट बहुत सुंदर था. तो पहला दिन मैं थोड़ा ऐसे थी कि ठीक है मुझे ये इस कैरेक्टर को 3-4 दिन देने पड़ेंगे टू रियली सीप इन. So I started conversing with him in the same dialect. ये जीजी क्या चल रहा है, सब ठीक है, हाँ हमारा तो बहुत परपंच चल रहा है, जीजी कहाँ बताया तुम्हें. तो ये सब कर करके I tried and try to get much like comfortable with the
Yeah. dialect. So Yeah. Do you want to give the next answer in the same dialect? जी जरूर बताइए. Tell me एक फिल्म इंडस्ट्री का मिथ जो आप बिलीव करते थे एंटर करने से पहले और अब वो बिल्कुल गलत है. जिस बहुत खराब लोग हैं एकदम, मतलब क्या बताएं, बड़े मतलब इंडस्ट्री तो लड़की जाएगी तो मतलब मेरे को नहीं लगता टिक पाएगी. ये सब मैं सुनती थी और वो डर कहीं बैठा हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है. पीपल आर वेरी नाइस, वेरी वार्म इन द इंडस्ट्री, Yeah. and I never felt like I was not welcomed. Okay, so tell me, you spoke about doing your homework when you get characters. How easy or difficult is it to get out of those characters then? Starting off my career, it was very difficult. I used to get characters back home, तो मुझे वो बाउंड्री नहीं पता थी कि ये तो काम है बहन, इसको घर मत ले आओ. हाँ. ऐसा नहीं मैं आके घर पे पटकती नहीं थी लोगों को आफ्टर दंगल. After Dangal, let's go. बट वो जैसे बोलने का तरीका बदल जाता है. कभी कभार आप कोई बहुत सैड सीन कर रहे हो तो पता नहीं चलता था कि ये मेरी सैडनेस है या मेरे कैरेक्टर की है. समझ रहे हो? कभी कभी मैं हफ्ते में डिप्रेस रहती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि वाई माई मूड इज सो लो, बिकॉज इट्स नॉट माई इमोशंस. आई डोंट नो, आई कांट पिन पॉइंट. मैं भूल जाती थी कि समटाइम्स एज एक्टर्स यू हैव टू इवोक इमोशंस. अपने आप को झूठ बोल के कुछ ना कुछ करके बोलना पड़ता है, एंड इट डज इम्पैक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड. Yeah. सो आई एम मच मोर अवेयर ऑफ इट नाउ. मैं पहले नहीं थी. जैसे मेरी सेकंड फिल्म वाज फोटोग्राफ, एंड द कैरेक्टर वाज सो रेटिसेंट एंड शाय दैट आई बिकेम हर, एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग कि दिस इज मी, आई एम मेलोनी. मैं किसी से बात नहीं करूं, मैं बहुत उदास हूं. तो मैं भूल गई कि नहीं, दिस इज माय कैरेक्टर दैट आई प्लेड, दिस इज नॉट द रियल मी. सो Yeah. नाउ आई थिंक आई एम मच मोर अवेयर. Yeah. How do you keep work and your personal life alag? I treat it as a job. This is But my like, how 9 do to you 5. do that? Because there's no 9 to 5, right? There is no 9 to 5. 16, It's 17, like a 18 4M, घंटे, yeah. 20 घंटे काम चल रहा है, फिर दूसरे सेट जाओ, फिर वहाँ काम चल रहा है. But still I treat it as a job. Whenever, whatever time I get, so whatever friends I have, they're all, most of them are not from the industry. My close group, my family, so they're not from the industry. So I think that's the reason I'm much more grounded. तो जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मैं थोड़ी ना एक्टर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है. तो वो they pull me down even if I go somewhere like तुमने क्या किया. So I think that's the thing that really keeps me grounded, and I honestly treat it as a job. I will try my best not to make my career my identity. Yeah. So yeah. Do you remember a moment जब आप ज़्यादा उड़ रहे हो and your friends got you down? No, अभी तक हुआ नहीं है ऐसे. पता नहीं, हो जाए. शायद. You guys have a question? I have two questions, by the way. First one is just now when ma'am said कि कभी ऐसा हुआ कि friends ने down करा, तो when was the first time you got recognized in public? Like how did you experience that? I have a very funny story. So as you all know, we Delhi girls are always on the toes, right? कि किसी ने कुछ बोला तो तेरे को बताती हूँ. वैसा ठीक है ना. आफ्टर दंगल मेरे को बॉम्बे में कुछ 3 ही साल हुए थे. दंगल का शूट खत्म हो गया, दंगल रिलीज हुई है. नेक्स्ट डे मैं गई हूँ मार्केट में और रोड ऐसा फुटपाथ पे आई वाज स्टैंडिंग वेटिंग फॉर एन ऑटो टू कम. तो सामने एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, एंड वहाँ उसमें से आदमी बाहर देख के ही वाज पॉइंटिंग एट मी डूइंग. I was like, की हिम्मत उसकी पूरी तोड़ो, मैं जाके तेरी पॉइंट किसको. And I made a very horrible face. I was like, and he was like, Dangal? Yes, Dangal. We were like, very good work, we loved the film. That was the first time I got recognized. But damn, I had to like really calm my दिल्ली वाला क्योंकि समझ नहीं आता था पास क्यों. अच्छा फोटो लेने अच्छा, thank you. Yeah. What was your second? Yeah, second question was you talked about the Paglet. So you mentioned कि after Paglet you got much more recognition. But like you worked with Ayushmann Khurrana. Yeah. How Not was recognized वैसा वो नहीं, मतलब I meant कि I saw a change in my career in the sense that there was definitely a change in how the audience also saw me as an actor. Yeah. Like how was working with Ayushmann Khurrana in Vidhai? Oh, amazing. That film,
in totality was the most wonderful experience I've had as an actor. Like, do you think working with Ayushmann Khurrana has somehow... Are you an Ayushmann Khurrana fan? Yeah. Are you Talk about Sanya, don't talk about it. No, please talk about him because he is someone who's very inspiring. Yeah, that's why I think he brought that change, you know, in the industry. Yeah. Where he started off as hosting shows, and then he was also an RJ, if I'm not wrong, and then an actor. He's also a singer. He's multi-talented, and he has the best script choice as an actor. Like whatever film, that's what we used to keep asking him, नीना जी, गजराज जी, और हम बैठ के सिर्फ ये पूछते थे कि सर हम आपको अपनी स्क्रिप्ट दे दें, आप पढ़ के बताएंगे हमें करना है नहीं करना, क्योंकि उनको जो नॉलेज है ऑडियंस की वो कई एक्टर्स में नहीं है. तो वो इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बट आई थिंक ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द ऑडियंस एंड ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट्स. he chose different films. Yeah, so definitely. That was a great... Definitely. I think an inspiration for me too when it comes to choosing the right character. And I think the one thing that stayed with me, I asked him, आप क्या सोचते हो जब आप फिल्में पिक करते हो या कैरेक्टर पिक करते हो? तो कहते हैं मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ एज एन ऑडियंस, तो मुझे लगता है मैं एंटरटेन हो रहा हूँ. तो मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. आई थिंक दैट ऑल्सो शिफ्ट हैपेंड आफ्टर वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन. He kind of inspired me to look at my scripts as an audience and not just an actor. Punjabi and... वो तो है कुराने मल्होत्रे. बल्ले बल्ले. Tell us something about Aamir Khan. मतलब उनके साथ काम करके कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा. Is there something you learned from them or like an experience that you would like to share? Everything about my career has come from my first film, my debut film. क्योंकि I'm not a trained actor. And I just cannot believe being someone who's not from the industry got an opportunity like Dangal, because that's sort of set the base for me as an actor, you know, कि मेहनत करनी है physically and you have to prepare with your script, your dialogues, and because we saw that it got translated on the screen and people could see it कि मेहनत करी गई है इस फिल्म पे. So that kind of became a base for me कि हर फिल्म में मेहनत करनी है इतनी ही, चाहे वो फिजिकली हो या आप डायलॉग्स पर हो, कैसे भी. एंड दैट ऑल्सो इज ऑल्सो बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम आमिर सर, कि वो अपनी फिल्मों में उतना ही पैशन और उतनी ही मेहनत डालते हैं. तो ये ज़रूर सीखा मैंने उनसे. Tell me that एक मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था that you actually went to the office and thought कि मुझे मूवी मिल गई and then you saw a cake coming. Yeah, so yes, I don't know, I'm so stupid. But still cute. हमारे 2 महीने से ऑडिशन चल रहे थे and सब थक गए थे ऑडिशन दे देकर and we were not allowed to audition for anything else. तो I have one question इसके बीच में. और भी लोग आपके साथ ऑडिशन कर रहे थे? Yes. अच्छा. There were 20 girls, फिर 30 girls, 20, 10, फिर 6 या 7 बचे थे. multiple rounds. Yeah, multiple rounds. Multiple rounds of not just acting, but we did wrestling and we also did gym training to show that we can, you know, we are capable of working out and building that body. Now तब तक कि हमने रेसलिंग का ऑडिशन नहीं दिया था, हमारे सिर्फ एक्टिंग का ऑडिशन चल रहा था और ये 1 महीने से ऊपर ये बात हो गई है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एडी सेइंग सो आपको आमिर सर के ऑफिस में आना है और आपकी मीटिंग है आमिर सर और नितेश सर के साथ, बट डोंट टेल एनीवन. नाउ आई हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग ऑन टाइम और बिफोर टाइम. ठीक है, लेट नहीं होती मैं. अब आई वॉज बिफोर टाइम, सो आई वॉज वेटिंग नीचे गार्ड रूम के पास. तो मैं टाइम पे जाना है, तो मैं इस टाइम पे लिफ्ट में पहुंचूंगी ऊपर. आई सॉ समवन एंटरिंग विद अ केक एंड माय माइंड हैज गॉन टू, मैं ऊपर जाऊंगी, केक होगा, केक पे होंगी कैंडल्स, वो कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये मूवी मिल गई है. तो मैंने नीचे सारे सपने देख लिए. ठीक है, फिर मैं ऊपर गई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि केक खोलेंगे. अभी लाएंगे, अभी बताएंगे कि आपको फिल्म मिल गई है नहीं. सो वहाँ पे कोई बैठे हुए थे, सबने मिलवाए. कृपा शंकर सर हैं, ये रेसलिंग सिखाते हैं नेशनल लेवल रेसलर्स को हमारी कंट्री के. मैंने कहा जी नमस्ते, हेलो सर. उन्होंने देखकर बोला ये तो रेसलर लगती है, ये रेसलर लगती है. और मैंने कहा मैं तो हूँ, मतलब मेरा तो आने वाला है केक. देन फाइनली वहाँ बैठे बैठे डिसाइड हुआ कि 1 हफ्ता हम इन लड़कियों को रेसलिंग करवाते हैं, फिर ऑडिशन लेंगे.
फिर इनको हम जिम करवाएंगे। फिर मैंने कहा गए और 2 हफ्ते बता दो अभी, बिकॉज आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि मैं इस फिल्म में हूँ। ऐसा था मेरा, मैं कि हूँ, मैं तो हूँ इस फिल्म में। Who is your Bollywood BFF? My Bollywood BFF. There are many. I think Radhika Madan. Yeah. And like one more question, like आपको दंगल मिलने से पहले कितने टाइम का स्ट्रगल था? लाइक मूवी मिलने से पहले कितना टाइम आपको लगा कि एंड डिप्रेशन, हाउ डिड यू हैंडल दैट कि अगर हम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिलती है, इंटरव्यू देके वापस आते रिजेक्ट हो जाता, हाउ डिड यू हैंडल दैट? Rejection is the most important thing in your life. Let me tell you. मैं इतनी बारी रिजेक्ट हुई हूँ इतनी बारी रिजेक्ट हुई हूँ कि मुझे लगता है वो रिजेक्शन हो के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो रिजेक्शन से आप नहीं, और फेलियर से आप कभी भाग नहीं सकते। दोज आर द बेस्ट टीचर्स। साल मुझे काफ़ी टाइम लगा टू गेट अ परफेक्ट ऑडिशन फॉर अ फिल्म। आई वॉज वेरी पिकी एंड वेरी चूजी, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे और मैं हर किसी को ऑडिशन देने नहीं जाती थी। इन माई माइंड आई वॉज लाइक, आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट फिल्म एवर and I'm going to do the best And you character did the best film ever. Exactly. So, thank you. So I had that in mind, and somehow I never doubted that thought in my mind. जहाँ doubt आ जाता है ना, then you succumb to that fear and you're like, नहीं हो पाएगा. But I never did. My plan A, as my plan A in college, 3rd year, when I got, like, I did my graduation, I got out of the college. My plan A was to become a choreographer because it was a easy way out. I thought, you choose the easy way because difficulty and changes are scary thoughts. Becoming an actor, moving to a different city altogether felt like a far-fetched dream. And I was like, maybe this is not me. Maybe I should become a choreographer. So I was like, plan A पे काम करते हैं, ठीक है? That never worked out. To a point where my mother saw a dream and she told me, मैंने सपना देखा बेटा कि तू ना डांसर नहीं बन सकती, तू स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी और वहाँ कोई लाइट नहीं थी, and I took you out of that place. And I was like, Mama, please don't say that because that's my passion. I want to become a dancer. And then I went to a dance reality show. I got rejected for whatever reasons because I had major doubt on myself too. ऐसा नहीं था कि जो भी whatever, मुझे लगता था कि मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ, तो a doubt was planted in my seat by my head, and I didn't get through that audition. Again, rejection. I stayed back in the city for some time. I went back to my father, told him that I want to become an actor. That was always my dream, to become an actor, because I had not shared it with anyone. Fearing that people might not get it. It's a dream. Yeah. कौन सोचेगा दिल्ली में बैठी हुई पड़पड़गंज की लड़की उसको एक्टर बनना है? तुम चुप करो, बैठो, जॉब करो. Was it tough for you to admit it to yourself that you want to be an actor? Yes, I didn't want to. As I said, you always choose the easier things because change and bigger dreams feels like an impossible dream altogether. So for me, it was that case. But I took that step. It took me time. For months, I remember I used to have no work. I used to feel dejected and rejected. क्योंकि आप ऑडिशन देने जाते हो, बहुत टाइम लगता है to get a call back. तो आपको पता नहीं है कि आपके पास रेंट देने के पैसे होंगे या नहीं होंगे, या खाने के पैसे होंगे या नहीं होंगे. और I used to, it's not that my father couldn't afford it, but I didn't want to ask them constantly. ऐसा भी नहीं था कि बहुत पैसे हैं घर में, जहाँ रहना बेटा रह लो. I used to stay with 8 roommates और हम छोटे से घर में रहते थे गद्दों पे. वो गद्दे के पैसे मैंने आज तक अपनी रूममेट को नहीं दिए बिकॉज वो पहले मूव हो गई थी बॉम्बे. मैंने कहा था मेरे लिए भी गद्दा और तकिया ले देना विच आई हैव नेवर पेड हर बैक. सॉरी नुंद्रिशा, आई विल. बट चूज, आई एम श्योर लाइक सबके माइंड में ना एक सपने होते हैं और फिर वो सपनों को ना माइंड कहता है बट आई हैव नेवर सीन दिस. Then the mind plants a doubt in your mind that this isn't possible. But let me tell you, the thoughts, the constant reoccurring thoughts that you have about your career, or the thing, that visualization that you get at times, those are true. Sometimes you don't even get those. So कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आएंगे ना. तब तक लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, is what I feel. One thing that I've noticed in all your interviews is you don't talk about struggle. Yeah. Do you think that's like a conscious decision you made, that I don't want to talk about my struggle and let my work do the talking? I think struggle has a very negative connotation attached to it.
फाइन, नहीं खरीदते थे हम, फ्रूट्स बड़े महंगे लगते थे, ड्राई फ्रूट्स तो सोच भी नहीं सकती थी मैं खरीदने का, बट these are all very privileged problems, you know. Yeah. I still had fun in Mumbai when I had no work. होते थे दिन जब मुझे लगता था all my roommates used to leave early for work and I was the only one without work. और कई लोग आके कहते थे oh you have moved to Bombay, are you wasting your father's money? तो मुझे लगता था कि oh my god, am I really doing that? But you know that how is it possible, जो मैंने बचपन से सपना देखा है वो कैसे नहीं सच हो सकता. तो वैसे भी लगता था. Why am I getting emotional? Oh. Yeah, so it was not struggle. You want water? No, I'm good. But look at me, I'm living my dream life. Is there something you did to give back to your parents? Like a vacation or something that you did for them? There is nothing that I can do for my parents. They have done so much for me. मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं उनके लिए मैं कुछ भी कर दूं, मेरे को नहीं लगता जो उन्होंने मेरे लिए करा है मैं उनको कभी रीपे करना चाहूंगी या कर पाऊंगी. You can't do that with your parents. You're really hotter than the bottom of my laptop. Damn, girl! That was a good one. So tell me, how hard was chopping your hair for Dangal? It wasn't hard at all. When you get an opportunity like Dangal, you're like ले जाओ अभी काट दो. और बहुत difficult होता था क्योंकि हम wrestling कर रहे थे कुछ 4-5 महीने, तब तक हेयर कट नहीं हुआ था. That happened I think 2 months before the shoot. But it was so difficult क्योंकि बाल खींचते थे. It's a contact sport. तो हम कोई भी लिफ्ट करने जाते थे, कभी चोटी अटक गई है, कभी बाल किसी के नी के नीचे आ गए हैं, सब वैसे ही झड़ रहे थे. हम गंजे तो हो ही जाते हैं. कुछ महीने और रेसलिंग करते तो अच्छा हुआ बाल काट दिए. Thank you. Okay, so now I have a 7-second challenge, and if you win it, you get something. मेरे को कटहल दिख रहा है वहाँ. You'll get the content you're finding. Okay, are you ready? Yes. 7 seconds to do the hook step of Channa Meria. चन्ना मेरे चन्ना. Okay, 7 seconds to name, to say. मैंने एक बार जो commitment कर दी उसके बाद अपने बाप की भी नहीं सुनता. But in the accent that you've used in Kathal. जी हमने एक बार ही कमिटमेंट कर दी तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते. हाँ. Okay. ये बिल्कुल खराब था ये. और मेरे पास सिर्फ 7 सेकंड थे. 7 seconds to tell us something about Aamir Khan that nobody knows. There is, oh my god, Okay. He's the king of Catan. Only sir will understand it. We have never said we play a board game. Okay. We used to. अब साल हो गए मेरे पास वो board game भी नहीं है. So he used to call himself the king of Catan. Okay. Catan एक game है. If you guys have played it, you should. It's a fun game. Okay, 7 seconds. पर बड़ी महंगी है मैंने अभी तक नहीं. 7 seconds to do the hook step of Sheila Ki Jawani. शीला की मेरा फेवरेट सॉन्ग है. Okay, 7 seconds to name 5 hot Bollywood actors. 5 hot Bollywood actors. You have to name them. Me. No, I'm kidding. No, why not? You can say your name. आगे बता दो. Katrina Kaif. Okay. Vicky Kaushal. Oh. अनुष्का शर्मा. Okay. One more, एक तो आप ही मेरा हो. तो मेरा नहीं मैं नहीं हूँ. Hot. आदित्य रॉय कपूर. Very hot. गई लड़कियाँ यहाँ गई. और कितने One बताने? more, एक और बता दो. शाहरुख खान. Yeah, okay. 7 seconds to tell us what you had for breakfast. मैंने आज खाया टोस्ट, बटर, चीज, मशरूम्स, फ्रेंच फ्राइज. बड़ा अजीब सा ही ब्रेकफास्ट था. हाँ पर हाँ. Okay, done. Now we have the headphones. अभी नहीं कटहल नहीं लाना अभी. इनको बहुत जल्दी हो रही है मुझे कटहल हाँ. पकड़ाने की. I'm going to give you headphones and whisper something to you. You have to guess what it is. बस मेरी हेयर स्टाइल है सर, मैं मारने वाली हूँ तुम्हें. Okay, first one. फर्स्ट वर्ड सुनाई दे गया मुझे, धीरे बोलो. हाँ, ठीक है, sorry. कटहल कहाँ है? कटहल कहाँ है? Wow, you're good at it. Okay. किथे कितने किथे चली ए मोरनी बनके. यही गाना चल रहा है. And you said it with the Listen, you literally this is the line which is playing. Oh damn. Coordination अच्छी है मेरी. Okay. हमारी छोरी छोरों से कम है के. है हमारी बनके हमारी
बन के हमारी हमारी छोरी, हमारी छोरी। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? Correct. Okay, this is the last. लास्ट वन, Yeah. Subscribe. स्नैपचैट, Subscribe. चमचम, Subscribe to Uncut. What does it sound like? Subscribe to Uncut. है Are you scared? Subscribe. सबके, सब Subscribe. Ting. सब देखते। Subscribe. मेरे से नहीं होगा ये। Okay, it's easy. Subscribe. है I was saying subscribe to Uncut because that's what I'm going to ask you to do. मुझे next. कुछ सुनाई नहीं I दे रहा। said subscribe to Uncut बोल दो यार हमारे audience। सब्सक्राइब टू अनकट, Thank you so सब्सक्राइब much. टू अनकट दोस्तों। Give us all one reason to watch Kathal. That's not you. Something else. मैं बोलने वाली थी मैं बैठी हूँ यहाँ पे। You want one reason? कटहल के लिए देख लो बेचारा, देखो साइड Oh yes, I'll give you the Kathal you're finding in the movie now. या वैसे हमारे जो कटहल है, एज आई सेड, वो इससे अच्छे अंकल होंग कटहल है। इतने बड़े बड़े कटहल होते हैं अंकल होंग, Here. पर ये भी क्यूट है। इसका नाम हम क्या रखें? What? Priyanshu? प्रियांशु। चलो No, you निकनेम name बताओ, it. जैसे बंटी, Kattu. कलावती। Kalavati? हाँ, Okay, Kalavati it is. and welcome कलावती to our family of Uncut. Yay! Done. Can you tell us? आपने बोल दिया ना subscribe. Subscribe to Uncut and don't forget to watch Kathal 19 May onwards on Netflix. Done. Thank you guys.